Acha. So the chapter name is work and energy. Okay. So first thing is what is work. सपोज मैं एक वॉल को धक्का दे रहा हूँ तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ। आप बोलोगे हाँ मतलब मैं थक जाऊंगा ना पूरा दिन अगर मैं वॉल को धक्का दे रहा हूँ। नहीं तो मेरे सर पे आप लोगों ने एक बोरी रख दिया, ठीक है, तो थोड़े दिन बाद मतलब मैं 1 घंटा 2 घंटे के बाद मैं थक जाऊंगा ना। तो आप बोलोगे क्या सर बहुत काम किया ना, ऐसा होता है? तो नहीं, अगर साइंस के लैंग्वेज में बोलूँ तो मैंने कुछ काम नहीं किया, ठीक है। तो साइंस के लैंग्वेज में, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, तो व्हाट इज कॉल्ड वर्क. So work is if you apply some force and if there happens some displacement of the object, then it is only called work. अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर मैं फोर्स दूंगा और इस फोर्स की वजह से अगर कुछ ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वो अपनी जगह से थोड़ा हट जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड वर्क. अगर साइंस की लैंग्वेज में अगर मेरे ऊपर आप लोगों ने एक बोरी रख दिया, मैं एक जगह पे खड़ा रहूँगा, तो दिस इज़ नॉट वर्क. ओके, क्लियर. सो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दिया, इफ आई अप्लाइड फोर्स ऑन सम ऑब्जेक्ट एंड इफ डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स इन ऑब्जेक्ट्स, देन इट इज कॉल्ड वर्क. ओके, सो फोर्स, it's clear what is work. So the unit of force is Newton, we know that na. Unit of force is Newton and displacement means how much means it's moved from one place to another. So this how much moves, meter in meter na. Displacement is in meter, so Newton into meter. So Newton meter is the unit of work, or this Newton meter is also called joule. Okay, so the SI unit of work is joule. Clear? Okay, so if I ask what is 1 joule, so 1 joule is if I applied 1 Newton force on an object, and the if I apply 1 Newton force and then 1 meter displacement happen, then this is called 1 joule. Okay, suppose I have an object and if I applied 1 Newton force and then because of this force 1 meter displacement happen on that object, then it is called 1 joule. Clear? Now energy. Okay, so second term is energy. So what is energy? So suppose I want to do some work, then for doing that work we have to need energy for that, no? So the capacity of doing that work is called energy. Okay, so the capacity of doing work is called energy, because in doing every work we need energy, no? So the unit of energy is also joule. For that reason we the units are same. Okay, so in our surroundings we have different kinds of energy like mechanical energy, chemical energy, heat energy and electrical energy. Clear? So in this chapter we'll describes about, or we'll discuss about mechanical energy. Other forms of energy are also important, but in this chapter we'll discuss only mechanical energy about. Okay, so mechanical energy are divided into two types of energies like potential energy, I written in short form. Okay, potential energy, and second one is kinetic energy. Okay, potential energy and kinetic energy. Okay, so let's see what is kinetic energy. Suppose we have two objects and these two objects are moving. Suppose we have two objects, suppose two bicycle or two car. One car is moving with 50 kilometer per hour, another car is moving with 60 kilometer per hour. These both cars are same. Then which one is possess more energy? Then we'll surely say that this car will moving with more energy. That means the car which is moving with high speed will possess high energy. Okay, so kinetic energy is the energy which is possessed by an object for its movement. जो movement के लिए जो energy pose करता है, और for movement, during movement the energy possessed by an object is called kinetic energy. So कोई भी object move कर रहा है, during moving the energy it possesses is called kinetic energy. An object with higher speed or then possesses higher energy also. Clear? So now the equations, what will be the equation of kinetic energy? So now in previous chapter we learned this formula na, v square minus u square by 2as. From this from here if I
want to calculate s, then 2a will be at the below side. Okay, so this, so here we written a formula, work is equals to force into displacement. Now force, what is the force? M into a. No, this force is m into a. Mass into acceleration is the force. Force is the mass into acceleration. In previous chapter we already studied about this thing. Force is equals to, always remember that, mass into acceleration. Okay, so here I can write, instead of force I can write ma, and displacement is a. Okay, this a is means s. Okay, here it should be s, huh? So s, here put the s, the value of s, then a will be cancelled, then this will be the final equation. But the initial, at the initial, suppose when these cars are at the rest position, that means it is not moving, then u must be 0, means initial speed is 0. So I can put u, value of u is 0. If I put the value of u is 0, then it will become half m and v square. Okay, so this is the equation of potential energy of an, sorry, kinetic energy of an object. I think you understand this thing, how it comes, na? So how it's come is also important, and the equation, to remembering this equation of kinetic energy is very much important. Okay, so the energy possessed by a moving objects is kinetic energy, and kinetic energy's formula is half m v square, where m is the mass and v is the velocity. Okay, so let's moving to the another energy form of mechanical energy, which is potential energy. Now potential energy, suppose you stretch a rubber band. Okay, you stretch a rubber band, or you lifted a object from here to the here, means up to distance of h. Then have you done any work? Then how much work? Okay, if you lifted a objects here, okay, now object is here at the stable. Now is it possess some energy? Because it is at, now it is in rest position, but still it possesses some energy. Okay, if you stretch a rubber band, and then if suddenly means if you remove it, then what happen? It will come and hit you, na? It start moving. if you अगर आप एक बो को, जो है ना, धनुष बोलते हैं इसको, इफ इसको स्ट्रेच करोगे तो क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर हो जाता है उसमें। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओगे, ऊपर लेके छोड़ दोगे तो क्या होगा, स्पीड से मूव होने लगेगा ना नीचे की तरफ। सो इस स्पीड कहाँ से आ रहा है, इसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? बिकॉज व्हेन एवर यू मीन्स, इसको जब ऊपर ले रहे थे, या ऐसे रबर बैंड को खींच रहे हैं, या किसी मतलब धनुष को हम लोग खींच रहे हैं, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। देन दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? सो द potential energy, you understand, whenever object is in rest position, it possesses some energy, and this energy also is called potential energy. So the equation is same, work equals to force into displacement. I written here, force is m into g. Suppose I am moving an object from here to here, so mass into gravitation, because if you want to move it against the gravitations to the h position, then it will be m into g. And displacement, how much displacement happen? Up to h. So I written here h, so mg into h. This will be the equation of this potential energy. Okay, now law of conservation of energy, this is very much important. Now what said it here? It said potential energy and kinetic energy is always constant. That means one form of energy is converting to another form. Suppose you stretch a rubber band, then potential energy is stored. When you means आपने खींचा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, जब आपको छोड़ दिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये मतलब ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट होता रहेगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स इससे पता चल रहा है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा, ठीक है, और द टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन द सेम। I think you understand this thing, na?
So potential energy is mgh and kinetic energy half mv square. Here I describes how it comes. So it will be always constant. Okay, maybe suppose total energy is 8, suppose this is 3, this is 5. now this becomes, suppose ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, ये इससे कम ज़्यादा हो गया, इससे कम हो गया, तो ये अल्टीमेटली तो 8 ही रहेगा ना। सपोज ये बढ़ते बढ़ते ये 5 हो गया, ये 3 हो जाएगा, अल्टीमेटली 8 ही रहेगा। ऐसे करके ये मतलब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नाउ पावर, पावर क्या होता है? सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। जिसका मतलब 1 सेकंड में सपोज प्रियांशु ने काम कर लिया 5 और अभिषण ने काम कर लिया 6 एक सेम टाइम में, तो क्या होगा? अभिषण का रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स इसका पावर ज़्यादा है, इसी को तो पावर बोलते हैं हम लोग ना। सो पावर इज कॉल्ड द रेट ऑफ डूइंग द वर्क। सो इफ आई राइट द इक्वेशन देन पावर विल बी कॉल्ड वर्क पर टाइम। Okay, so work, we know that what the form means unit of work is joule and time is second, so it will be joule per second na, joule per second. This joule per second is also called watt. Okay, so this is the SI unit of power, so watt. Okay, so 1 kilowatt is the means like 1 kg is equal to 1000 gram, is like same 1 kilowatt is equals to 1000 watt. Okay, so basically whenever we calculated powers for industrial use, like आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है, आप लोगों ने कितने पावर यूज़ किया, तो इसका जो इक्वेशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा यूनिट में लेते हैं। वो लोग क्या लेते हैं? किलो वाट आवर, KWH, किलो वाट आवर। ओके, सो 1 किलो वाट आवर्स कितना जूल्स होता है? ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, ये तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। आई थिंक अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे। आप लोग इसको लर्न करो और एक्सरसाइज और जो भी क्वेश्चन है वो ख़त्म करो।